Okay, so yesterday we were discussing regarding the concept of span of control or span of management. This is the concept which is describing that how many subordinates can be supervised effectively by the superior. Here we have discussed that if you are giving more number of subordinates to one superior, then it would be very difficult for him to manage the things and to get the work done. And even the controlling function also cannot performed in an efficient manner. Whereas if you are giving him the less number of employees, then there will be a lot of control and efficiency also will be there. But at the same time, the strict control may affect the organization working environment in a negative manner, because many times people don't want the strict supervision or strict discipline. They want some liberty, they want some freedom, right? So over here we have understood that a fixed number of the subordinates can be given to the superior. That should not be very high and that should not be very low, right? So that depends upon so many factors. These are the factors which you can see on your screen, which are to be considered while deciding the number of subordinates to be given to one superior, like nature of work, experience of supervisor, subordinates ability, faith in subordinates, incentives offered, and types of organization. So these are the factors which are to be considered when we are deciding the number of subordinates to be given to one superior or to one supervisor. Now, in our first chapter, when we were discussing regarding 14 principles of management, there we have understood one concept, or you can say one principle, that was balance between authority and responsibility, right? Henry Fayol have suggested whenever you are giving authority to one manager, give the same amount of responsibility as well to the same manager, so that he will not misuse his authority, because he knows that if he's taking any wrong decision, he will be wholly and solely responsible for that particular act. And if you are giving only more authority or more responsibility, no authority, then he will become frustrated. So there is a need for balancing them. And then after that, we have learned two more concepts, that was MBO and MBE. These are the two concepts where the superior is allotting work to the subordinates, and subordinates are working under the guidance and the supervision of the superior. So this is how the top level managers are getting relieved from the routine work, and they can focus on the more significant work like visualization or planning or important decision making. They can devote work time for those particular function. So when you are giving responsibility to the subordinates for completing the work, you have to give the same amount of authority. You have to be very careful. You have to see that whatever responsibilities have been given, you are giving the same authority, neither high nor low. There should be balance of that. So here comes a question, that how the delegation should happen, how the transfer of authority should take place. So today we are going to understand the concept of delegation of authority. Delegation means transfer or giving over the authority. Whatever authority the superior is having, he is handling over those authorities to the subordinates. Because without authority, the subordinates may not be in a position to fulfill the responsibility or to complete a particular work. So there is need for delegation of authority. So what the definition says, we are having one very good definition which has been given by John Pierce and Richard Robinson. Both of them were the managers, were the management scientists, we can say that. What they have given the definition, it says that it is a process by which manager assigns tasks and authority to subordinates who accepts responsibility for those jobs. So delegation, it is a process. It is not, the one minute job. Okay, you cannot just give handover the work to the other person. No, it is not like that. It is a process. That means first you have to identify who are the capable people
who will be in a position to handle that responsibility? That is to be evaluated, that is to be calculated on scientific basis. Because when you are giving the work to one particular person, you have to give the authority also. And there are chances that person may misuse the authority. So you have to be very rational while selecting those people. एक मैनेजर जब अपना काम किसी को हैंड ओवर करता है तो उसे बहुत केयरफुली हैंडल करना है. अगर उसने ये काम किसी गलत लोगों को हाथ में दे दिया, they will misuse that particular authority and they will run away also. There was one case of one foreign bank. It happened actually in India. And what that fellow used to do, that he was having the password to access the books of accounts of the people who are depositing money in the form of checks, right? Or those who were dealing with the debit and credit card, even that access he was having. So what that fellow has done, he started making the clone of cards. Clone means a duplicate cards. Whatever debit cards we are using or credit card we are using, there is one chip inside that, right? There is an electronic chip where all our details are inserted, our account number, even the bank details, our full name and all, everything is there in that. So the moment anybody is swiping that card, all the details comes on the screen. So what this fellow has done, he started making the clones of those cards because he was having access to those accounts, and he started taking out money from the account of the people. Now here he was having the authority to access. At the same time, he was having a responsibility also to complete one particular task, but he misused that, right? So that was cheating with the people. Of course, people were not ready to bear that loss because the authority was given in the wrong hands. Then bank somehow they managed it. So these things are happening. So whenever manager is giving authority or responsibility to other person, it is to be evaluated correctly. You have to see that the person is right to whom you are giving the authority. So it is a process. It is not a one-day job or 1-minute job. You have to follow a process where manager assigns the task. Assigns means he is giving or handling. Task means work. When you are giving the work, that means you are giving the responsibility. So along with the task or responsibility, you have to give even the authority to whom? To subordinates who accept responsibility for those jobs. Now here this particular line is important because many a times the subordinates may not be in a position to accept the authority or responsibility which you are going to give them. Many times it happens. Even you people also, you can evaluate yourself. Many times when teacher is giving you some extra work or some particular job, you may get reluctant. You may feel that अरे पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा, पता नहीं गलती हो जाएगी तो टीचर मुझे डांटेगा, और गलती हो जाएगी तो मेरे फ्रेंड्स हंसेंगे. So with that fear, you are not accepting that. So over here, this particular word is also important. Superior will be giving task and authority to the subordinate who accept responsibilities for those jobs, who is ready to take the responsibility of those work. Then only the authority can be given to him. So that is, a clear-cut definition, which looks very simple, but it is having a very deep meaning, right? Over here, so many things are taken care by John Pierce and Richard Robinson, right? Over here, they are explaining that how the selection process is going on, what are the precautions to be taken by the superior when he is allotting the work or the authority to the subordinate. The subordinate also should accept them. So everything should be there, then only the delegation of authority will happen. Now in India, still there are many organizations or business firms, those who are following the traditional management system. Traditional management system is a system where the people used to follow the centralized method, where all the powers are with the top level managers, right? So they only make all the decisions. Authority is in the hands of the top level managers, not in the middle level or the lower level. Slowly they are accepting that modern management concept, but still it will take some more years to spread in the entire business forms of India. But even today, that is the problem. So here delegation is going to play that particular role. If you are having a good process of delegation of authority, then
there are chances the system of decentralization will be introduced in all kinds of business organization, and it would be helpful because when you are giving little liberty and freedom to your own subordinates, they feel motivated and they share their innovative ideas with you, and with that ideas you can expand your business. So that is required actually, but still there are so many obstacles on the path of delegation of authority. यहां तक हमने ये सीखा कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो उनको फायदा होता है, 100% फायदा होता है, लेकिन फिर भी ये काम नहीं कर पा रहा है। इसके लिए कुछ बैरियर्स हैं, कुछ रुकावट है। वो क्या है, दैट वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग, एंड दीज आर कॉल्ड एज बैरियर्स ऑफ डेलीगेशन। नाउ हियर the authority is getting delegated from superior to subordinate, superior से subordinate की तरफ authority जाती है। तो यहाँ पे barriers भी दोनों तरीके से आते हैं, right? तो एक barrier है on the part of superior, that means ऐसी points जो superior के हाथ से हो रहा है, from the point of superior. Superior does not want to delegate the authority. Why he does not want? Superior क्यों नहीं चाहता है? These are the reasons for that. The first reason is fear of being exposed. He feels that he will get exposed in front of his subordinates. He feels that everybody will come to know that what sort of work I used to do if he is giving authority to the subordinate. Right? Many a times, people are pretending that they are working very hard and, they are full time doing the work for the office or for the business firm. But when actually somebody else is taking the charge of that particular office, then they used to come to know that अरे वो तो कुछ करता ही नहीं था. What is the work? Nothing is there. That means वो खाली दिखावा करता था. तो ये एक्सपोज कब होता है? जब कोई और आके आपकी सीट पे आपका काम करता है. तो यहाँ पे वही पॉइंट हो जाती है. Superiors are having the fear that I will be exposed if my subordinate will be doing my work. There are chances this superior may be taking some bribe or might be involved in the corruption work. So if he is giving that work to the subordinate, then some clients may tell him all as well कि अरे आपका साहब तो 10,000 रुपए लेके ये काम कर लेता था। तो अभी सबॉर्डिनेट को ये बात पता चल गई कि अरे मेरा बॉस ये काम करता था, मुझे तो पहले पता ही नहीं था। तो ये जो सुपीरियर है ना, हमेशा डरता रहेगा और अपनी अथॉरिटी कभी देना ही नहीं चाहता। That is the first reason, the first obstacle or the barrier on the part of superior, why superior does not want to delegate the authority. That is fear of being exposed. I hope you understood this particular point. Fear of being exposed. That means he is having one kind of fear that his working style or whatever he is doing, it will be come in front of everyone. Then the next point is fear of losing control. Now this particular point is very genuine, because when you are giving all the authorities to your subordinate to do the work, then there are chances they may stop listening to you, right? They may stop listening to you. They will not listen to you. They will see that sir आपने ये काम हमें दे दिया ना, हमें करने दो, आप अभी बीच में मत बोलो. That means you are losing the control on subordinates. Generally, the subordinates used to be very respectful to you, very fearful to you when you are having all the authorities. But when authority is given to them, then why they will have the fear for you in their mind. They will feel that अरे हमें authority मिल गया ना, अभी हम भी equal पे आ गए, सैलरी कम है तो क्या हुआ, बट अथॉरिटी तो है ना हमारी भी. तो वो कंट्रोल निकल जाता है. तो उस डर की वजह से कई बार सुपीरियर अपनी अथॉरिटी डेलीगेट नहीं करते हैं. So even that is also one of the reason or the barrier for the delegation. Then another barrier is fear of subordinates excellence. Now this particular point, it's you can say the inferiority complex in the mind of the senior person. Subordinates may be knowing the capability of the superior may be knowing the capabilities of the subordinates. उनको पता है कि ये काफी टैलेंटेड है, इसको कंप्यूटर का पूरा नॉलेज है, इसको सारे एप्स के बारे में पता है, एंड ही इज डूइंग वर्क वेरी फास्ट. सो इफ आई गिव माय वर्क टू हिम, he will show that he can do the work better than me, and this is going to create an atmosphere where people may feel that कि subordinate इतना अच्छा काम करता है, superior तो करता ही नहीं था.
So even that fear is always there in the mind of the superior, that is fear of subordinates excellence. उनको ऐसा लगता है कि अरे कल का ये आया हुआ लड़का अगर ये मेरा काम करने बैठा और अगर बहुत अच्छे से कर लिया तो नाम तो मेरा ही खराब होगा, हो सकता है कि वो मेरी पोस्ट पे आ जाए। होता है ऑर्गेनाइजेशन में, प्रमोशन डिमोशन होता है। एक बॉस जिसने आपको अपॉइंट किया हुआ है कुछ सालों के बाद आपका ही असिस्टेंट हो जाएगा, ये मैंने बहुत सारे केसेस में देखा हुआ है। तो हेयर अगेन दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज ऑल्सो बिकमिंग द ऑब्स्टिकल। ये डर की वजह से कि अरे कहीं पे ये ज्यादा अच्छा काम ना कर ले तो फिर मेरा नाम खराब हो जाएगा, उसकी वजह से भी वो लोग अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करना चाहते। दैट इज फियर ऑफ सबऑर्डिनेट्स एक्सीलेंस। देन द नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट्स। ये उल्टा हो जाता है। समटाइम्स द सुपीरियर मे फील दैट अरे सबऑर्डिनेट को तो कुछ आता ही नहीं है, कल को इसको काम दे दिया तो पूरा बिगाड़ देगा, मेरा काम बढ़ा देगा, सो बेटर है मैं ही करता हूँ। सो इवन दैट इज ऑल्सो देयर, lack of confidence in subordinates. Superior may feel that whatever work will be given to the subordinate, he may not complete that work in time. And if he is not completing the work in time, nobody is going to blame him. Everyone is going to blame on me because I am the responsible person to complete that work or to get the work done from him. So if he is not completing the work, then it is better to do the work by myself. Why should I give my authority to him? I will be doing the work. So even that is also becoming the obstacle on the path of delegation. That is lack of confidence in subordinates. Then the next is lack of ability to direct. Many times these things may not be there, but over here, the superior may not be in a position to guide the subordinate that how to work. Superior को guide करने नहीं आता है कि काम करना कैसे. That is also an art. If you are able to direct someone or if you are able to guide someone, that is an art. In fact, I can say that that is the skill जो सभी में नहीं होती है, right? अपना काम दूसरे को समझा के उसी तरीके से करवाना, right? Many a times the superiors are not having that ability to direct. They are not in a position to guide the subordinates that how to do the work. So it is becoming the barrier. दे फील दैट अरे उसको गाइड करने से अच्छा है काम भी खराब हो जाएगा, मैं ही कर लेता हूँ, उसको तो समझाने भी नहीं आएगा। क्योंकि कई बार जो सुपीरियर्स है उनको ऐसा लगता है कि काम बहुत टफ है, उनको समझेगा नहीं, ना ही मुझे समझाने आएगा, तो फिर ये गलत हो जाता है। Then the next is desire to dominate. Now this is the very common point, desire to dominate. Dominate means किसी के ऊपर अपना हक जता के काम करना, दादागिरी करना, in simple words you can say that, right? So if they give the authority to the subordinates, and why they will get fear for the superior, they will not get any kind of respect for the superior, or they may not be having that respect whatever they used to have before the delegation of authority. So here the superiors are not willing to delegate the authority because they have one wish in their mind to dominate the subordinates. अगर अथॉरिटी दे दिया तो दादागिरी चली जाएगी ना, डोमिनेशन चला जाएगा। सो उनके ऊपर राज करने के लिए, उनके ऊपर अपना हुक्म जमाने के लिए, डोमिनेट करने के लिए सुपीरियर्स अपनी अथॉरिटी नहीं देते। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द, यू कैन से द मेजर रीजन, स्पेशली इन इंडिया, आई कैन से दैट इंडिया में जो मेंटालिटी है मैनेजर्स की वो ज्यादातर नॉमिनेट करने वाली होती है, राइट? सो दिस इज द major fault or major problem which requires some sort of counseling, that you should not have the feeling of domination, but you should guide the others also, because they are the future managers. आप हमेशा तो नहीं रहने वाले, so somebody else should be there to take care of that. So ये भी एक बड़ा obstacle बन जाता है for the delegation. Then the next is barriers on the part of subordinates. Now let us say superior is willing to, सुपीरियर में ये सारी बातें नहीं है, सुपीरियर वांट्स टू डेलीगेट द वर्क और डेलीगेट द अथॉरिटी, बट सबऑर्डिनेट्स आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट. व्हाई दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. नंबर वन इज फियर ऑफ क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म मीन्स दे मे फील दैट अगर हमारा काम गलत हो गया तो सब हमारे बुराई करेंगे, सब चिढ़ाएंगे,
ये तो आप अपने साथ ही रिलेट कर सकते हो. Whenever the offline lectures used to take place, I found that many students, they were not in a position to raise their voice or ask the question whatever doubt they have. ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि टीचर ने पढ़ा दिया और बच्चों को सब चीजें समझ आ गई. हो ही नहीं सकता, थोड़ा बहुत डाउट तो आता ही है. बट दे यूज टू रिलक्टेंट टू आस्क दैट क्वेश्चन बिकॉज दे यूज टू फील, अरे अगर ये सवाल पूछ लिया तो टीचर क्या सोचेगा कि क्या मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ, टीचर क्या बोलेगा, पहले सुना नहीं क्या. ऐसा कभी टीचर नहीं बोलता है, मैं तो कभी नहीं बोलता हूँ. राइट. सो हेयर यू, द पर्सन हु इज गोइंग टू गेट द जॉब is having one fear in his mind that if anything goes wrong, then everybody will criticize me. Everybody is going to say negative about me. And because of that fear, they are saying, no, we don't want that authority. Now, over here, superior wants to delegate the authority, but this barrier is coming on the part of subordinate. Subordinate does not want. सबॉर्डिनेट को नहीं चाहिए क्योंकि उसको डर है कि मेरे को लोग क्रिटिसाइज करेंगे, मेरी बुराई करेंगे, फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा. लाइक दैट, विद दैट पर्टिकुलर फियर, they are not ready to accept it. Then the another reason is fear of being exposed. Over here, he is also having a fear of being exposed. ये बहुत रेयर केसेस में होता है. अगर इसने जॉब लेने के टाइम पे झूठ बोला था कि मुझे पाइथन भी आता है, मुझे टैली भी आता है, मुझे एक्सेल में तो मैंने मास्टरी कर रखी है, राइट, ये सारी चीजें उसने बोली हैं और सर्टिफिकेट्स भी लेकर आया है. और जब उसे एक्चुअल काम दे रहा है उसका सुपीरियर, करे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो डिकोडिंग कोडिंग सब जानते हो, ये काम है, ये करके दे दो, मैं तुम्हें अथॉरिटी भी देता हूँ, मैं तुम्हें एक्सेस दे देता हूँ, कंपनी के जो भी कंप्यूटर्स हैं तुम एक्सेस कर सकते हो और काम कर सकते हो. अब इस बंदे को तो काम आता ही नहीं, इसने तो सारे झूठ बोले. यहाँ आता भी होगा तो भी इतना अच्छे से नहीं आता होगा, सर्टिफिकेट्स है. सो विद दैट पर्टिकुलर फियर ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड, ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट. वो करेगा ही नहीं. वो बोलेगा नहीं नहीं सर मुझे नहीं करना है, फिलहाल तो मुझे नहीं आता है. लाइक ही मे गिव सम और अदर रीजन because he is having that fear in his mind that he will be getting exposed. Right, he has said that he is having mastery in Excel और सिंपल सा कैलकुलेशंस नहीं आते हैं उसको, टोटल करने नहीं आता है उसको, पाइवट टेबल बनाने नहीं आती है. ये सारी बेसिक चीजें हैं जो सभी को आती, और उसको तो वो भी नहीं आता है. तो ये चीज बाहर आ जाएगी. तो विद दैट फियर ही इज नॉट एबल टू accept that particular challenge. Right, many times these people they used to say so many things. अरे मैं तो ये काम भी कर सकता हूँ, मेरी तो उसके साथ भी पहचान है, मैं तो उसको भी जानता हूँ, वो तो मेरा फ्रेंड है. तो ये सब चीजें अगर सुन के बॉस ने उसको काम दे भी दिया और फिर उससे तो खुद को असलियत पता है ना, then he is not taking the charge. So even that is also there. I can see some smileys on the chat box. You people are enjoying, I think, this particular chapter. Anyways, the next is, ये जब आप एक्चुअली में जॉब करने जाओगे ना, यू विल रिमेम्बर मी बिकॉज माय ओल्ड स्टूडेंट्स जिनको मैंने पढ़ाया ये सारी चीजें, वो खुदा के बताते हैं सर आपने जो बताया था ना वो सच में होता है ऑर्गेनाइजेशंस में. बिकॉज आई एम जस्ट गिविंग यू माय एक्सपीरियंस, आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विद यू. ओके, द नेक्स्ट रीजन इज फियर ऑफ लूजिंग जॉब्स. This particular thing is happening especially in the private organizations, fear of losing jobs. See, if the authority is given and if the person has not fulfilled the required work in time, then there are chances he may lose the job. There are chances. होता है ऐसा. अगर आपको एक अथॉरिटी दे दिया, आपको एक क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए भेज दिया, and they told you that this is a very important meeting, we are giving you the authority, and see that he is accepting our offer and we are getting the business from that particular client. And the person who is getting the authority may feel that अगर ये काम फेल हो गया, suppose मैं convince नहीं कर पाया, then company will not get the business, and there are chances company may suffer from losses as well. And if company is suffering from losses, the first target will be the person who has gone for the meeting, right? He will be removed, he will be fired from the job. So because of that fear that if anything goes wrong, there are chances I may lose my job, he will not accept that challenge. ये बहुत ही कॉमन सा रीजन है सभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में. स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा फिर भी कम रहता है क्योंकि हर एक चीज ट्रांसपेरेंट रहती है, पेपर में पूरा चीज रहता है कि किसकी कितनी अथॉरिटी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वहां पे ये चीज नहीं आती है. लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में ये बहुत आ जाते हैं
इनफैक्ट जो एकदम हाई पोजीशंस पे लोग रहते हैं ना, उनको भी कभी कभी जॉब से निकाला जाता है कि कंपनी को आपने तो लॉस करा के दे दिया, आपने अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर दिया. सो विद दैट पर्टिकुलर फियर, पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग द चैलेंज. They don't accept the delegation of the authority, right? So that is fear of losing job. That is one more reason for that. Then the next is lack of information and resources. Now here, this is a point where the subordinates says that I am ready to take the challenge, I am ready to take the responsibility and authority, but I don't have that much knowledge of the work whatever has been allotted to me. जो काम आप मुझे दे रहे हैं उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है. That is lack of information. And at the same time, जो resources चाहिए वो भी मेरे पास नहीं है. That means आपके पास ना तो information है ना तो resources है. Resources मतलब कई बार जो काम आपको दिया जाता है ना, उसके लिए आपको अलग से एक प्रोग्राम्ड कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी, आपको कुछ सबऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, आपके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए. ये रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीजें हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं, आपको हेल्प करती हैं आपका काम करने के लिए. बट व्हेन यू आर नॉट हैविंग ऑल दीज थिंग्स, हाउ कैन यू डू दैट पर्टिकुलर वर्क, राइट? योर बॉस इज सेइंग दैट ओके, नाउ यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर वर्क, और ये काम तुम्हें दे देता हूँ, काम खत्म हुआ तो तुम्हें कमीशन भी दे देंगे. पर उस काम करने के लिए आपको अलग से एक लैपटॉप चाहिए जो स्पेशल प्रोग्राम्ड हो, जो बहुत रेयर मिलता है. वो आपके पास है ही नहीं, ना तो आपके घर में है, ना तो आपको ऑफिस प्रोवाइड करके दे रहा है. तो आप कैसे करेंगे काम? तो यहाँ पे एक्चुअली जो देखा जाएगा तो इसकी मर्जी है एक्सेप्ट करने की, वो काम करना भी चाहता है, बट ही इज नॉट हैविंग दैट मच इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क, एंड एट द सेम टाइम ही इज नॉट हैविंग इवन द रिसोर्सेस. काम करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो भी चीजें उसके प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो वो काम करेगा कैसे? So because of that reason also, he is not accepting the challenge. Then the next reason is lack of self confidence. ये तो हमने पहले ही सीख लिया, right? You may not be having the fear of criticism, but you are not having confidence at all in you. आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है कि काम मैं कर पाऊंगा. ये तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जैसे यहाँ पे एक था इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वैसे यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स का भी एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है. अपने आप को ही वो अच्छा नहीं मानते हैं कि नहीं यार, वो तो अच्छा काम करता है, उसको तो इतना नॉलेज है, मुझे तो कुछ नहीं आता. ये तो आपने अपने आप को ऐसा बना दिया. दैट इज कॉल्ड एज लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, inferiority complex. And because of that, the subordinates are not ready to accept the work, they are not ready to take the charge of the authority whatever is given by superior. Then the last point is lack of incentives. Like यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये आज की डेट में बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है, लैक ऑफ इंसेंटिव्स. As far as term incentives are concerned, incentives means some kind of financial help or non-financial help to motivate the employees. For example, कई बार कंपनीज में ऐसा रहता है कि अगर एक डील उन्होंने फाइनल कर दी, कंपनी को प्रॉफिट लेकर आए, तो उसकी पूरी फैमिली को और उसको एक फॉरेन ट्रिप फ्री में स्पॉन्सर किया जाता है. मतलब टिकट का भी खर्चा, रहने का खर्चा, वहां सारा खर्चा कंपनी ले लेता है. तो ये इंसेंटिव्स हैं. कई बार स्पेशल बोनस मिलता है, कई बार एक तरीके का क्या बोलते हैं, अलग से फैसिलिटीज दिए जाते हैं. तो ये अगर नहीं मिलता है तो आप काम क्यों करेंगे, राइट? सी ओवर हियर you are going to do the work of your superior. आपका जो काम है आप वो तो करते ही हो, पर यहाँ पे क्या हो रहा है स्पेशल केस में, सुपीरियर अपना एक काम आपको दे रहा है अथॉरिटी के साथ, कि ये देखो ये अथॉरिटी भी दे रहा हूं और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी काम कर लो. लेकिन आपको उसके लिए कुछ भी मिलने वाला नहीं है. आपको ना तो सैलरी मिलने वाली है एक्स्ट्रा, ना तो ओवर टाइम मिलेगा, ना तो बोनस मिलेगा, ना तो और कोई इंसेंटिव मिलेगा, ना तो आपको लेटर ऑफ एप्रिसिएशन दिया जाएगा. ऐसा भी नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट दे देंगे कि दिस पर्टिकुलर फेलो हैज वर्कड अ लॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड ही हैज कंप्लीटेड ऑल द टास्क इन द प्रॉपर मैनर without misusing the authority and all. You are not going to get anything. Then there is no motivation in your mind to go ahead with it. Then why you will accept that particular challenge for now? That is called as lack of incentives. और इनके मन में क्या रहता है, सबऑर्डिनेट्स के मन में, आपको भी ये फीलिंग आने वाली है जब आप काम करेंगे कि अरे काम तो सारा हम करके लेंगे,
और फिर क्रेडिट ना पूरा मैनेजर खा जाएगा, पूरा सुपरवाइजर, वो तो कभी कुछ बोलता नहीं, मीटिंग में मस्त शान से खड़ा रहता है, लोग ताली बजाते हैं, और ये कभी बोलता ही नहीं कि हमने काम करा है, उसने तो कुछ भी नहीं किया, उसने खाली साइन किया था, उसको तो कुछ भी नहीं आता। ये फीलिंग भी रहती है सबऑर्डिनेट्स के मन में। दैट मीन्स वो इंसेंटिव्स नहीं होते हैं ना, रिकॉग्निशन नहीं होती है, देन दे फील दैट व्हाई वी शुड डू दैट पर्टिकुलर वर्क, दे रिफ्यूज, दे से दैट नो सर वी डोंट वांट दिस। और अगर वो मना कर देते तो आप उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर जबरदस्ती किया और फ्यूचर में काम खराब हो गया, very clearly they will say that sir we told you that we don't want to do this work, why you have given that work to us, you forced us to do that particular work। तो और फंस जाएगा सुपीरियर। तो ये इसकी वजह से ये काम यहीं पे रुक जाता है। so these are called as barriers on delegation, why this delegation of authority is not happening, right? So on the two parts, on the part of superior and on part of subordinate, इसको थोड़ा अच्छे से आप समझ लेना है, और जितना हो सके इस पॉइंट्स को थोड़ा सा याद करके रखो, चाहिए पर इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख दो, क्योंकि इससे रिलेटेड पॉइंट्स हमारे आगे वाले चैप्टर्स में आने वाले टॉपिक्स में वो काम आएगा। Okay, so with this note, I just stop sharing the screen and we will continue in our next period with the next part of the chapter.